Hi everyone. Today we have with us Shambhavi. She's working as a research in the market research industry right now, and she has a background in electrical engineering. She did her undergrad from Shivnad University in electrical engineering, and now she's doing a market research. It's a great arc that she has been gone through. She has dealt into design. She has dealt into market research. Also in electrical engineer. I would love to hear about her story. So that's why we have Shambhavi with us today. Thank you very much, Shambhavi, for being here. How are you? Thank you so much for having me. I'm great. Okay, it's currently midnight, so I'm sleepy. Yeah, I know But you're thanks sleepy. for I having me. We have been having this conversation of having this interview for so long, and now finally we Yeah. had got the time to actually that matches you and suits me too at the same time, and we could have that. So, Shambhavi, could you just tell me a bit about how you got into this design space and how did you get into market research and how this thing happened? How does this unfold? Okay, so in school I was like a really normal child. I was creative, but then I didn't like dwell a lot into it, into my creativity. I used to sketch, but that was it. But I always knew that I wanted to create things. Like as a child, you don't know, like you have that innate quality to create, but you don't know how to name it, right? So I remember there was this workshop back in my eighth grade where they were just building stuff out of, I don't know, cardboards and Legos and stuff like that. I was really attracted to that workshop. I was like, oh, that's great. And the following week, they had a robotics workshop. Yeah. And I really liked it. As a child, as a 13-year-old, I really liked it. So I thought, okay, how do I get into this? I want to build robots. That was back like in eighth grade. So I asked my dad, and my dad was like, be an engineer. I was like, great, okay, fine, perfect. So then I Mm. just used to study for engineering. But Ah, in 11th grade, I think I barely passed my physics exam. that's And true. that That's was, like for everyone. that's like with everyone. So I was like, Huh. okay, it's tough, but I'll get through it. I failed my But maths 11th class unit test as far as I remember. And I 11th class failed was it. tough too. 11th Yeah, class was I really. failed it. I was like, out of 30, I got 8. I knew something was off, but I was like, okay, I mean, physics is tough. Everyone's failing physics, we'll see. And in those times, I obviously joined another coaching institute. So Right. basically, my coaching used to happen every day. So I did not have the weekend batch, it was every day. Acha. So Because every it day. was basically 8 to 2 school and 3 to 8 I have. Acha. So it was pretty exhausting because, I didn't even have time to think what was going on. Exactly. School kiya, coaching kiya, that was it. That was my whole year, 2 years. Mm-hmm. So I remember like 12th ke end May, the coaching was like they stopped. They were like, okay, focus on your board exams now. That's Right. it. For sure. So at that time, I had a lot of time because I was already done with my board exam preps because pre-boards वगैरह होते थे December में, Yeah. right? Mm-hmm. So I was already done with my board prep and had a lot of time Okay. for the first time in 2 years. Huh. So I used to sketch a lot because I was so Sure. frustrated, anxious about board exams because board exams is like one thing and पूरा build up होता है एक साल का For board sure. exams. Yeah. It's too much for me and I didn't know that I had It's anxiety also the since a noise long around time. you. Ki, matlab, That time I had a lot of time around November, December. So I used to sketch a lot because I had all this pent up anxiety and I didn't know where to, and I did not even have a phone. So I gave my phone for phone. So I did not even have any distraction. I used to watch TV, but bus wahi tha. So when I used to sketch, I used to feel very light, and I knew that कुछ नहीं होने वाला मेरा कोचिंग वो क्या जेई के एग्जाम में because I used to give those exams coaching में right कुछ नहीं mock होता था मेरा tests. a mock test Mock right tests. it's been so long It's been I so long. heard that word so I was like Mock I knew exams. at the back of my mind that nothing's gonna happen but how do I tell my dad I did not have the heart to tell him because Of course. in December I told my dad that maybe I don't want to do engineering because hoga nahi then he was like okay board exams de do we'll see it's like fine okay we'll talk about it board exams mein. During my 12th grade one more thing happened Mm. which was I started peeing a lot. Peeing I a know lot? it's out of, yeah, I'll tell Acha. you. There's a conclusion to this. Acha, So I acha. started Okay. doing a lot and I Okay. started getting exhausted. So Okay. I knew something was off because I was always an active child. I used to skate a lot. So I was always Acha. very active. So this was very strange for me to get tired so easily. And I used to pee a lot, and I mean a lot, Oh every my half God. hour, every hour. Yeah. So it became a problem. Acha. Mm-hmm. I told my dad, I told my parents that ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा ऐसा. And they were like, Indian parents are always in denial about everything. They are. Banda gay hai, denial.
हर बड़ी लाइट डिनायर, सब नॉर्मल Denial. होना चाहिए रूल बुक के हिसाब से, जो भी अलग जा रहा है डिनायर. हाँ, so I told my dad that, and as a normal sane person, I googled कि क्या हो रहा है, that I had diabetes. I was like, Ah, wait, what? ये तो right. what? Hmm. And I told my dad, and obviously they were shaken, but it started like पहले बहुत कम start हुआ था, right? And उसके बाद like during the end of the year, it was a problem. It was a legit problem because I used to pass out. अच्छा. तो पढ़ते Okay. पढ़ते I used to sleep. अरे इतना कोई नींद में नहीं होता that you just sleep. Okay. But then I told my dad very firmly that I need to get checked. Something is off. And he was like, okay, give your board exams. The minute you finish your board exams, we'll go to the doctor. Because abhi jaoge, abhi kuch pata chalega, then it will throw you off the game. So what happened was, March mein board exams start hote hain. Hmm. First I had my English exams, then we had 9 days off. Right. So us 9 days mein, I think the third day, I had this enormous tooth pain. Toothache बहुत गंदा हो रहा था. So I Okay. like my dad was like, ठीक है डॉक्टर के पास जाते हैं, at least he'll give you some painkillers or something, कुछ तो होगा कुछ एग्जाम दे देने देंगे के लिए. just to subside it, right? Yeah. So I went there and I went with my dad and my grandpa. So my grandpa had to get his results checked from his diabetes doctor. Right. तो मैं साथ में चली गई थी बस. So what happened was I went to the dentist, उसने medicines दिए, I was coming back, so we had to pick up my grandpa. So we waited at the reception while Right. he was getting checked. Hmm. So my dad knew the receptionist क्योंकि वो बहुत पुराना family friendly था वो Right. doctor. तो receptionist को बोला that my daughter is feeling this and this and ऐसा ऐसा symptoms बोलते हैं and she says it's diabetes but I don't think it is something like that. The receptionist, उसका face से color चला गया था bro. I know that face. अच्छा. And she was like, उसको अभी prick करो. Pricking as in like blood sugar test करो glucometer से. Okay. So मैं गई Hmm. and मैं check किया and it was out of range. And I was just like, what is happening? And I had to give my physics board exam Physics board in exam. 5 days. Anyway, so doctor ने बताया that it's type 1 diabetes, it's an autoimmune disorder, and it happens to, and it can happen to anyone at Right. any age. Like I was 17, but it can happen to children also. I know like young children, as अच्छा. young as 2 years old, उनको भी होती है. So it's an autoimmune disorder, right? Right. Autoimmune diseases. Anyway, so that happened. उसके बाद से my dad was a little shaken. Hmm. Came back, whatever, उसका procedures वगैरह हुआ. Anyway, so I gave my exams उस state में. So board exams तक he did not start my insulin injections. Like Okay. another 2 he did not. Because I knew कि computer science का exam बहुत late होता है. हाँ. So I think I had to give like physics, chemistry, maths का exam. So that Right. was 2 weeks. So usually 2 weeks के बाद start करेंगे. तब तक medicines दिए थे. तो he was like ठीक. maybe medicine से control हो जाए. So what used to happen was after my board exams, वो जेई के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? Right. सो सुबह मैं एग्जाम देती थी, शाम में मैं डॉक्टर के पास जाती थी. That used to happen, so I couldn't speak to him about design or arts or anything because I was already shaken up so much. And Right. my dad was like, इसको दूर नहीं भेजना है. Like I can't send her off to Chennai or some engineering college like that because अच्छा. because it, like she's newly diagnosed. So anyway, so we were just like looking at colleges and seeing क्या हो सकता है. So my dad was like, okay, maybe go to Manipal, Jaipur because it's like closer. Don't go Right. to the main campus or something like that. And I completely forgot that I had to speak to him about that because I was already shaken up by the fact that I had something. So anyway, so I remember the last exam was bits का exam था कुछ and I had हाँ. my board का result भी उस दिन था. Right. वो सब हो गया, bits में तो कुछ हुआ नहीं. Right. उसके बाद I came back and I spoke to my dad. I was like, क्या करना है अब? Because हाँ. do I take an off? Because मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं भी गए, मेरे को आता नहीं था इतना, but और भी खराब गए because I was dealing with all that mentally. Exactly. Right. Right. So what do we do? And we were just talking, right? So someone told my dad about Shiv Nadar University. अच्छा. That ये अच्छा university है. It's like really the concepts are nice and like पूरा system is also great. You can do majors, you can do minors. It's वो भी है मतलब sell Right. किया उनको. And my dad's colleague's daughter was there also. अच्छा. So we spoke to her and once I heard the major minor concept, my dad and me decided that ठीक है major engineering में कर लेते हैं, do a minor in design so that gave my exams and हो गया उसमें. And वो it was relatively near also. It was like 2-3 hours away from my place. And वो residential college है तो everyone had to stay there. तो वो सब था problem थोड़ा, but it was still better than कोई और college. Went there. Second year में minor लेने का time आया, मेरे clash हो गया था. Clash किसके साथ? मेरे majors के साथ.
अच्छा, okay. Yeah. So I couldn't, basically, in a nutshell, I couldn't pursue design there. I did my electives in history, but अच्छा. Mhm. so Right. first year में you couldn't take electives. हाँ, वो तो होता सेकंड ही ईयर है, में right. मैं ले नहीं पाई, फिर थर्ड ईयर वाज वेरी स्ट्रेसफुल, चला गया। फोर्थ ईयर जब आया तब प्लेसमेंट्स का टाइम था, राइट? Right. Mhm. सो वो सेवेंथ सेमेस्टर जब प्लेसमेंट्स होते हैं, आई वाज सो स्ट्रेस्ड बिकॉज़ अचानक से द होल करियर थिंग हिट मी। तब तक तो बस एग्जाम देना है, पास करना है, एग्जाम देना, पास पास करना है। करना है, आई that's नेवर, it, हाँ. आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, बट आल्सो एट द सेम टाइम आई हैडंट थॉट अबाउट एग्जैक्टली क्या करना है मेरे को एक्टिवली, बिकॉज़ Right. एंड देन उसके बाद टाइम नहीं मिला सोचने का। सच बताओ, मैंने, आई couldn't like, आई नो पीपल हु हैव एक्टिवली thought about what they want to do if they don't want to pursue their majors. मैंने वो नहीं किया, that was my mistake Right. till my third year. And Mm. जब placement आया and I saw people getting placed in great companies, Yeah. that is when I thought that okay, I need to pull my socks up and do something about it. Right. अगर मेरे को engineering नहीं करनी हो, मेरा technical में नहीं हो रहा, कुछ तो करना है तो कुछ bro. तो करना पड़ेगा. Right, and placements was so stressful for me that पूरा एक semester I was sick also. Mm. So I had a lot of time to just think. So I started creating, like illustrating a lot, अच्छा. just to take my mind off. Like जैसे 12th में किया था, same thing. Mm. Mm. So I Mm. started getting into digital art, and then one of my friends who was pursuing design, a minor in design, SNU में, he अच्छा. told me about design. I wasn't aware of design as a field अच्छा. Mm. at This was all. just a Like, hobby for you till now. yeah, I, मतलब मेरे को awareness ही नहीं थी कि graphic illustration, web design के अलावा कुछ होता भी है. And that is my fault again. Mm. तो मैंने काफी रिसर्च किया लास्ट सेमेस्टर में कि अच्छा, एंड देन आई, उस टाइम आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में एवरीवन वाज गिविंग एग्जाम्स एंड एवरीथिंग मास्टर्स के लिए, बट मैंने उस टाइम नहीं दिया, थिंकिंग दैट पहले मुझे पता तो करने दो, मुझे करना क्या है करना क्या है? एग्जैक्टली, राइट? बट ऑब्वियसली आई टुक अप अ जॉब इन एन एडटेक स्टार्टअप इन गुड़गांव हाँ. just right after graduation. Like I graduated on From campus 25th. placements, this is? Yeah, अच्छा. and Great. 25th को graduation हुआ, 31st को मेरा job start हो गया. Start. Again, no time to think. Mm. Started going there with a startup, so 6 days a week. कोई टाइम नहीं मिलता था again. Yeah. And 6 दो days. महीने बाद I went there. I just left my job one day. Probation period पे. I just went there. I was like, I can't do it. I क्यों? don't have time Why to did you think have about that design. thought? ये आज छोड़ देता हूँ बस. How what did you Not think like, about it? I first thought that job करते करते I'll think about design. कैसे pursue करना है, where हाँ. to go, तब कुछ concrete plan होगा तब छोड़ूंगी मैं. Mm. I was like, नहीं होगा. And this is shit work. Eh, Young वो energy थी ना अंदर. Because I was like, I was coming, like I'm speaking, coming across privilege से पूरा अच्छा, because I knew that अगर मैं job छोड़ूंगी कुछ होगा नहीं, मैं घर पे बैठ सकती हूँ, मेरे पापा कुछ नहीं बोलेंगे. Right. बोलेंगे भी तो डांटेंगे, like I don't have anything, इसलिए मेरे को पैसे देने हैं. My dad was like, ऐसी होती है jobs, ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा, ये हाँ. वाली छोड़ दी तो दूसरी दूसरी अलग कुछ नहीं मिल जाएगी. Right. I was like, अच्छा ठीक है. So ठीक है, मैं घर पे बैठी थी. My dad was like, ठीक है, दूसरी job ढूंढ लो. Mm. Mm. But and meanwhile, I joined this design coaching because I did not know कहाँ से start करना है, क्या start करना है, कौन से exams देने हैं, and I thought they would help. जो full disclosure फालतू होता है, design coaching मत लेना, मत it's a लेना. scam. It's a scam. Scam है. वो पूरा मेरे, I wish I could go back and reverse that one thing, because I generally don't regret any of my decisions except that one. And उसके बाद I joined that coaching. So my dad was like, ठीक है अभी coaching में जाओ, and I was like, मैं weekend की coaching join करना चाहती हूँ because I'm looking for a job meanwhile. Right. So I used to go there, and then शुरू में when I went there and I picked up a pencil after 6 years. जो थोड़ा बहुत sketch किया था, I told you to relieve my anxiety, but that was it. हाँ. पर proper sketching नहीं की थी, right? Hmm. So I knew मेरे को कुछ नहीं आता. Baby steps Right. थे मेरे. मैं job के साथ कैसे करूँगी? So I came Exactly. back, asked my dad that okay, January में exams है, अभी जुलाई चल रहा है, आई मेरे को उतना टाइम ऑफ चाहिए, आई कांट डू दिस विद अ जॉब, मेरे को उतना टाइम ऑफ दे दो, एंड अगर हो गया तो हो गया एग्जाम्स में, और अगर नहीं हुआ देन मैं जॉब ढूंढूंगी. द फर्स्ट थिंग ठीक. आई डू इज फाइंड अ जॉब एंड देन आई परस्यू माय ड्रीम्स, देन आई वोंट बॉदर. आई वाज लाइक ठीक है, ही वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, नो Hmm. डाउट. मतलब No. आई हैव ऑलवेज बीन इन अ वेरी सेफ स्पेस अबाउट दैट. Hmm. So yeah, so those were in like December and January में थे. ठीक है. Went on like a 2 week break, came back. फिर February में results आए. So I was ठीक है. really disheartened. But I was like, 2 दिन रो लिया. अब क्या करना है? Decision क्या करना है. Right. Hmm. Right, because I did not have any plan.
आई वाज मैं और मेरे पास कोई बैकअप नहीं था इस पॉइंट। आई न्यू मेरे को जॉब ढूंढनी है, बट इट्स कहाँ, क्या, कौन सी जॉब, कहाँ जॉब ढूंढनी है, क्या ढूंढना है, क्या मेरी स्किल्स है। एनीवे वो सब हुआ एंड फेब एंड में आई स्टार्टेड लाइक गिविंग आउट resumes to my friends की मैं रेफरल डाल दूँ। That was the हाँ, easiest way to get an interview, right? So right, I think I exactly. dropped Right. 6-7 referrals and एक कंपनी से रेफरल उसी दिन मेरे को कॉल बैक आ गया था that we are looking Right. for that position. Mm. So I think Feb end of March first week में I went there, 4-5 rounds they किया. So this is the company I'm working in correct. When there हो गया, पैसे was very decent. Because वो market research है तो उनको पैसे मिलते हैं अच्छे से. अच्छा. तो ठीक है, आई वाज लाइक हाँ ठीक है हो गया। सो दे वर लाइक ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 23rd मार्च है, ये आपका 16th को मेरे को आया था वो This is 23rd 16 March मार्च 2020. 23rd March. ये 2020 बहुत 16 मार्च को important year है ये बहुत, क्योंकि this is going राइट। to change stuff. सो 16 को आई वाज टोल्ड कि ऐसा ऐसा है, आपको 23rd को आना है नोएडा ऑफिस व्हाटएवर। ग्रेट, व्हेन देयर शॉप फॉर क्लोथ, ग्रेट, पैसा हो गया, पार्टी करनी है व्हाटएवर। सो कोविड वाज लाइक रूमर्स फैल गए थे कोविड के। आई हाँ, रिमेंबर बिकॉज़ मैं लास्ट इंटरव्यू देने गई थी तो माय डैड वाज लाइक मास्क पहन के जाओ। लाइक व्हाई? हाँ, कोई किसी ने पहनता मेट्रो में मास्क। आई वाज द कोई ओनली नहीं पास, एलियन हु वाज वेयरिंग अ हाँ. मास्क। हम्म. सो उस समय तो people weren't taking this seriously, you know, they were like, हमारे भी नथिंग, दे थॉट कि classes चल रहे वायरल थे. इन्फेक्शन टाइप है। What's this? We don't even know what's this. And सो आई थिंक 20th को सारे ऑफिसेज शट हो गए थे। तो मुझे फोन आया कि अभी तो ज्वाइनिंग हो नहीं सकती, सो अब देखते हैं जो गवर्नमेंट बोलेगी उसके हिसाब से करेंगे। आई ठीक है, 1 महीने की बात है, घर पे बैठते हैं, कूल, अभी तो बैठी 1 और महीने बैठ जाते हैं। बैठी, अप्रैल हो गया, अप्रैल तक कुछ नहीं किया है, मतलब एवरीवन वाज लाइक शॉक में थे सब लॉकडाउन के, तो कुछ नहीं किया था, बैठे हुए थे सब लोग। अप्रैल को देख कॉल में देर लाइक कि जुलाई में आपका स्टार्ट होगा। आई वाज लाइक व्हाट, what? जुलाई, 3 महीने अप्रैल चल रहा advance. है ब्रो, कुछ कर ले, मतलब मेरी माइंड में डाल दे डोंट वरी, ये हो हम्म. रहा है, सबके साथ हम्म. हो रहा है, कोई तुम वो इंसान नहीं हो ऐसा, बिकॉज ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाती है, मे बी ऑफिस शट हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ राइट? भी हो सकता है. बिकॉज दे टोल्ड मी कि वो ऑफर रिवोक नहीं कर रहे। हाँ, important बात ये है दैट कि वाज they weren't इम्पोर्टेंट। revoking offer. They were saying कि हाँ, intake will take it a bit later. That's it. हाँ। Your सो दिस वाज intake अप्रैल। will be later. पूरा अप्रैल ऐसे ही चला गया फिर। और मैंने भी आई थिंक आई थोड़ा बहुत यूएक्स के कोर्सेज वगैरह करती थी। उस टाइम पे लोग इतना न्यू था ना ये सब, लॉकडाउन, कोविड, लोग ग्रोसरीज कहाँ से लाना है वो सब फिगर आउट हो रहा है। तो मेरे पास, और बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ डे जॉब, आई यूज्ड टू लाइक हेल्प माय फैमिली एंड कि भाई ग्रोसरीज कहाँ से लानी है और ये कहाँ हाँ, से करना है। exactly. तो इतना मैं सोचती नहीं थी, मुझे लगा जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी जॉब, तब देखेंगे। थोड़ा बहुत कोर्सेज कर लिया यूएक्स पे। हाँ, उस टाइम पे जस्ट बिफोर द लॉकडाउन आई मेट अ फ्रेंड was already working in UX अच्छा. design. मैंने इंडस्ट्रियल डिजाइन के एग्जाम्स दिए थे, राइट? Right. एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड दैट इंडस्ट्रियल नहीं होगा मुझसे परस्यू बिकॉज ऑफ XYZ, बहुत रीजंस है, वो फिर से मुझे घुसना नहीं है, बट लाइक ठीक है। बट आई वाज लाइक ठीक है, उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज उस टाइम पे आई वाज लाइक जॉब ढूंढनी है अभी, फिर अभी सोचेंगे Right. डिजाइन के बारे में, हाँ. राइट? सो आई मेट अ फ्रेंड बीच में। तो ही वाज लाइक कि मैं, मतलब मैं यूएक्स में काम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा होता है, उसको देखो यूएक्स क्या होता है उसके Right. बारे में। सो मैंने लॉकडाउन में यूएक्स के बारे में काफी देखा था। आई वाज लाइक ओके, दिस इज समथिंग आई रियली लाइक, बिकॉज़ आई वाज ऑलरेडी लाइक रियली इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड Yeah. रिसर्च। हिस्ट्री के कारण मेरा रिसर्च पे काफी स्ट्रांग हो गया था, एंड डिजाइन तो डिजाइन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एप्टीट्यूड, बहुत Right. सारी चीजें थी दैट ड्रू मी टुवर्ड्स यूएक्स अ लॉट। Yeah. उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज दे कॉल्ड मी अगेन इन जून अच्छा. And telling now? me that October shift हो गया आपकी join, and that was when I got my first panic Panic attack. attack. बहुत गंदा panic attack आया था उस दिन मेरे को, like I locked myself and I was just crying, क्या करना, because I thought कि मेरा gap बहुत बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, I don't have anything solid. जब इंसान के पास कुछ solid नहीं होता है तो वैसे ही इतना चल रहा है दुनिया में, right? Right. और मेरे पास कुछ था नहीं, मैं I'm not pursuing anything अभी, ना Mm-hmm. job है ना college है, कुछ भी है, तो बहुत Yeah. difficult हो रहा था मेरे लिए। Exactly. बहुत गंदा पैनिक अटैक आया। 2 days ago a family member passed away. 2 days after that a family member passed away. अरे बाबा. So it was like a really bad time, June. तो उस अच्छा. टाइम पे 2-3 दिन फिर से रोई मैं, तीसरे दिन आई वाज लाइक क्या करना है, अब अक्टूबर तक कुछ करना है, अब मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। So I put together a very amateur portfolio, very amateur, मतलब जितना मेरे को समझ आया केस स्टडी क्या होती है Right. उतना बनाया था। I started like, and I blindly started like cold texting people on LinkedIn. So this was a Requested portfolio for which position now? UX intern.
UX It turned intern के लिए you made a whole portfolio and started messaging and mailing कि No, I मुझे was like, well, it internship was just one case study and some graphics का काम. But I ठीक started है. like messaging people a lot. मैं Hmm. community के part होने लगी. I started talking to people a lot. कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या expectations होती है, क्या करना चाहिए, Because masters this is करो the या तो correct way to follow, right? This is the correct way yeah, to follow yeah, and go about it. exactly. And वो बाद में पता चला, right? So उस time पे I got an internship miraculously in some early age startup. वो start ही हुआ था अभी. हाँ, Okay, अक्टूबर का August, नहीं था और October आई नहीं लाइक था. अक्टूबर में स्टार्ट ही होने वाला है मेरे जॉब तो अगस्त हाँ फिर तो सितंबर ग्रेट ग्रेट टाइम है okay. सो हाँ. मैं कर रही थी एंड एक महीना वहां पे काम किया देन पता चला दैट आई एम द सोल डिजाइनर नाउ Hmm. आई नीडेड गाइडेंस बिकॉज़ मेरे को कुछ नहीं आता था Right. कुछ भी नहीं आता था वो बंदा मुझसे बोल रहा है ये करो वो करो आई एम लाइक ब्रो आई कांट आई डोंट नो Hmm. मेरे को ऐसा लग रहा था कि चेंज करनी चाहिए इंटर्नशिप और ये सब लग ही रहा था तो फिर आई थिंक जुलाई में सॉरी मैंने जुलाई में स्टार्ट की थी जुलाई अगस्त का था सितंबर का कोई प्लान नहीं था मेरे पास आई लाइक घर पे अच्छा. बैठ जाऊं Hmm. Hmm. सो उसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद मेरे को फिर कॉल आया कि जनवरी में स्टार्ट हो रहा है अब एंड दिस कॉल आई गॉट इन अक्टूबर नहीं सितंबर सितंबर September. Hmm. सितंबर में कॉल आया था मेरे को सो दिस कॉल आई गॉट इन सितंबर Hmm. दैट आपका जॉब अगेन जनवरी डेफर हो रहा है Hmm. एंड आई वाज ऑलरेडी इन दैट शिट इंटर्नशिप हाँ. Exactly. right so I was like another panic attack and this internship wasn't going anywhere मेरे को पता Hmm. था मैं छोड़ने वाली हूँ उसको Exactly. Hmm. तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने थे मेरे पास अभी Hmm. के Hmm. एंड मेरे पास ऐसा कुछ सब्सटैंशियल आया नहीं था कि मैं कहीं और अप्लाई कर लूँ हाँ. दूसरा पैनिक अटैक अगेन मैंने फिर वही किया और लोगों को अप्लाई किया Hmm. बहुत इंटर्नशिप्स के लिए एंड दिस इज वन लाइक इसके बाद वाली इंटर्नशिप जो मुझे मिली Right. वो कंपनी के बारे में मेरे को ऐसे नॉर्मल लिस्टिंग पे कहीं पे दिखा था बट आई रियली लव द कंपनीज आइडिया द प्रोडक्ट बहुत पसंद आया मेरे को बहुत अच्छा फ्लैट प्रोडक्ट बना रहे थे वो लोग Right. एंड आई रियली वांटेड कि यू नो आई शुड बी अ Hmm. पार्ट ऑफ इट सो उसके बाद आई मैसेज द गाय आई वाज Hmm. लाइक could you have a position for an intern because I really love your product and you know मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं but I'm willing to give my 100% Right. अगर कोई मेरे को गाइड करने को so like he replied back and he's like okay do this task and we'll get back to you so I did Hmm. that task they Hmm. got back to me and like the interview was great they liked me ले लिया मेरे Superb. को बहुत बढ़िया. एंड उसके एग्जैक्टली लास्ट इंटरव्यू से पहले ही माय ग्रैंडपा पास्ड अवे तो वो इंटरव्यू भी थोड़ा रुक गया था तो वो भी अनदर लाइक यू नो वेरी टफ पीरियड क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रही थी उस इंटर्नशिप के भी इंटरव्यू में भी नहीं So during this क्योंकि lockdown, you had to go through this two like deaths of in your family, and on या top of that, you had to find this internship which you were यस not happy about at all. या लाइक You just had बेसिकली to get into it. जॉब पेपर हो गई है कुछ Hmm. है नहीं करने को ड्रीम्स परस्यू नहीं कर पा रही पता नहीं करना क्या है एंड Exactly. स्ट्रेस भी है Hmm. बिकॉज जॉब की स्टेबिलिटी भी नहीं है उस टाइम पे Exactly. Right. सो दैट स्टार्टेड इन अक्टूबर सितंबर को मैंने दूसरी इंटर्नशिप छोड़ी और ये ढूंढी Hmm. तो सब हुआ था सो और ये प्रॉपर लाइक 3 मंथ्स इंटर्नशिप थी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ग्रेट अच्छा. जनवरी जॉब स्टार्ट एंड आई हाँ. रियली लव दिस internship and I think 1.5 months into the internship I got infected COVID With से COVID, now you got May infected, and this is in which month? November end November, and you are last now November last week you were tested COVID positive. तो अब छुट्टी लेनी पड़ी एंड जब मुझे कोविड हुआ उसके एक हफ्ते पहले आई थिंक अक्टूबर पूरा जा चुका था इंटर्नशिप का Hmm. नवंबर फर्स्ट वीक था अच्छा चल रहा था इंटर्नशिप Mm-hmm. माय कंपनी पीपल कॉल्ड मी देयर लाइक अब जनवरी में नहीं आना अब दिसंबर में आना है Now they have यस preponed it. Okay. Hmm. बिफोर आई कुड टॉक टू देम अबाउट इट मुझे कोविड हो गया तो अब मुझे कोविड की तो लीव लेनी पड़ी थी एंड जैसी कोविड की लीव खत्म हुई ये जॉब स्टार्ट हो गई सो मिडवे छोड़ना पड़ा मुझे इंटर्नशिप एंड आई वाज रियली लाइक वेरी सैड अबाउट इट दैट्स द होल स्टोरी एंड आई एम स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो How the whole thing unfolded for you. Because यस from being strenuous diagnosed with story the autoimmune diabetes type, and after that going through all of this, getting COVID and all that stuff. I mean, people say sometimes I'm going to go philosophical in this. Life is hard, but until unless you've seen things like these, I don't feel you can actually justify what you say about life.
that's when you understand what really life is. But people have been blessed with not having those diseases. They don't have all those problems that, you have Hmm. to get a job, do something or the other. Well, if you talk to 10 people, you hear 10 stories. And that's the That's why, that's the beauty of life, and that's what exactly. I do this, because I want to know this Yeah, stuff. that's why I really liked to come on the show because Uh, people, everyone needs to do this. मतलब ऐसा नहीं है कि exactly. तू ये कर रहा है तो तेरे को लग रहा है कि यार ऑलरेडी लोग इतना बात कर रहे हैं, पहले से इतने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, नो यू किसी और को तुम टारगेट कर रहे हो ये, Uh, बट मैंने मैंने बात नहीं की किसी से ऐसे पब्लिकली इसके mm, बारे में, तो mm, मतलब आई फील लाइक जब भी लोगों को मन करता है ऐसा कुछ करने का, दे शुड जस्ट गो एंड डू इट. exactly. ऐसा नहीं है कि लोगों ने करा है पहले से तो मैं क्या करूंगा एंड हाउ विल आई Uh, क्लेम माय स्पेस, नो यू exactly. विल hit different people. They are Exactly. different. Thank you very much for watching the first part of my interview with Shambhavi. In the first part, we talked a lot about her life before the pandemic, after the pandemic, whatever happened during the pandemic. In the second part, we're going to talk a lot about her podcast, what she does in that, and about her life, about her design, and what she does in that. Currently on the channel, 70% of our viewers are not subscribed. Do subscribe this channel. Get in touch with everything that's happening. See the content that's coming out. Also, would love to for all of you support the initiative that I have right now that I'm trying to spearhead. Do like, share, subscribe. Looking forward to a lot more of you guys coming up, dropping your comments, likes, subscribers. Bye bye.